Today in the class of material studies we are going to study clay, which is a granular material. Do you understand the meaning of granular? Yes. That is grains, the material which is made out of grains. Okay? And there are various techniques. You will be learning how to convert the granular material into linear material and planar material, and how to join them together to create various kind of objects. Okay? As well as you will be learning various kind of techniques which have been started by human beings from the very beginning to develop basic objects, basic products. Okay, so the very first technique will be coiling. In the coiling, you will be using your fingers and hands to make various kind of coils. Coils मतलब पतले rolls. Okay, and then you will be joining them together to make some kind of structure, some kind of object. Okay, and then you will be using technique pinching. Pinching means you will be using fingertips to create some kind of object or some kind of structure as per your requirement. Okay, and then you will be using one technique called slab. In that slab technique, you will be making slab. You will be converting granular material into various kind of slabs, into planar material. You know, in coiling you converted granular material into linear material. In means you convert it into line. In a slab you will be converting granular material into slabs, and then you will be making various kind of objects like this. This is one slab object. Okay, and then you will be making various kind of tiles. Tiles will be in size of 5 inches into 5 inches, and the measurement, the thickness of the tile can be approximate 1 centimeter or more, not beyond 2 centimeter. On those tiles you will be developing various kind of textures, keeping in mind what you already have explored, elements of design and principle of design, while developing some kind of motif on that. And you will be using sense what you have of sacred geometry, what you have observed and researched. So while making structures of sacred geometry, you will keep in mind principle of design, and you will be using elements of design. Lines and dots means clay rolls, and coiling the lines on that surface. What you can do on that surface, you can do engraving, you can do carving, you can do embossing. Embossing after when the tile dries, you just rub that surface and it shines. That is embossing. Okay, you will be doing that in this whole exercise. And the third exercise, which is called mural. In the mural exercise, you will be understanding how low relief, medium relief and high relief mural can be done. In that exercise, you can take inspiration from any art movement, and that from that art movement, that structure, that form, you will be converting into mural. Okay, so now let's start with initial demonstrations related to coiling. Create some kind of flask. So you can use this technique to make any kind of object which can contain something, but not liquid, of course. But how we can contain the liquid in that, we will learn that as well by putting a thin wall inside this structure. And there are some more examples. You can see very refined detail of coiling, to develop some kind of object. Okay? Yes or no? Are you understanding? Yes. Now this is one technique of pinching. The guy is doing pinching. He is using the clay dough, the clay structure in their hand, and then through his pinch to one thumb and finger, he is making the structure. Okay? He is using the pinch to give any kind of shape of clay to the clay. And this is one object developed by pinching technique. Is it interesting? And this is again one technique, but here the pinching and slab both technique have been combined. First the slab has been developed, then it has been cutted in the shape of fish, and then those
shapes have been joined together to create this kind of object. So you will be learning these techniques. This is one example of slab work. First the slab have been developed, and then after joining those slabs together, this kind of container have been developed. Is it understandable? Yes. Any confusion? So the granular material can make any kind of object, and it was the very first material used by human being to create some kind of structure, useful utensils or tools. So let's start. How those coils have been converted in this kind of structure, and then it is very flat from inside. How it can be done to make it stable? This is done to make it stable. The object have been stabilized by using pasting of the same material inside. So it makes more strong too. Okay. So now we will take the clay like this, and we will use our palm to roll it like this to make some kind of coil. We will make the coil as per our choice, whether it's thin or thick mix. It's up to you. Whatever kind of object you want to make, you use your creativity or imagination. So for an example, we want to make this kind of structure. So we'll make this kind of coil, and then we'll cut from the end. But we are going to paste this coil on each other. So हम क्या करेंगे, हल्का अंदर से इसके ऊपर हम कट लगाएंगे. Okay, we'll make the cuts on that. Why? Anybody can tell why we are making these kind of cuts? To make it stable. अच्छा, हम ये पानी क्यों लगा रहे हैं इसके ऊपर, कट लगा दें, जिससे हल्का सा जो है इसमें ब्लेड शार्प चले. ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, वरना ये कॉइल आपकी क्रैक कर जाएगी. ठीक है. एंड देन हम छोटा ये भी बनाते हैं. We'll cut this and we'll roll this together. Now, can you see this crack? Why it happened? Can you tell me? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ड्राइनेस आ गया है क्ले में. ओके, सो व्हाट विल डू टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ क्रैक्स? दिस इज वन एग्जांपल, एंड देन विल टेक सम काइंड ऑफ more material and we'll mix some water in that, and we'll take this paste and we'll make this surface stable, more stable inside. Okay, you'll do that. Yes, we were talking about this kind of cracks, how we can avoid. आपने देखा होगा घर में जब रोटियां क्रैक करने लगती हैं तो what we do, आटे को थोड़ा सा और गुथते हैं, थोड़ा सा और मलते हैं उसको, जिससे वो और सॉफ्ट हो जाता है. We'll do the same kind of trick or experiment with clay. What we'll do, we'll clay more, will mesh this clay more, so that we can avoid the cracks. We can use crack cream as well. Okay, so now this was one spiral kind of thing. If we want to use this kind of structure, different kind of coils, but one coil is a bit small, one coil is a bit big. What we can do, छोटे से बड़ा करते हुए we can create some kind of vase, some kind of structure. So we will make coils like that. Now we have ready one coiling object. So we will cut, and then we'll see a bit bigger one than this, supposedly this big, जब भी उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, and then इसके edges को एक दूसरे के ऊपर चिपकाने के लिए we'll make cut on these edges
जिससे वो अच्छे से चिपक जाए। ये ग्रूव्स में हल्का सा चला जाएगा तो जल्दी से टूटेगा नहीं। विल डू लाइक दिस एंड देन विल smudge the crack. We merge the crack and then one ring is ready. We'll make another ring in the same way. After making the cracks, and then we'll join and then we'll merge these edges. अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर इसको लगाना है। तो हमने अभी क्या किया था, हमने इसके ऊपर कट्स लगाए थे जिससे ग्रूव्स के अंदर, इसके ग्रूव्स के अंदर इसके ग्रूव्स मर्ज हो जाए और वो मोर स्टेबल हो जाए। हम कटर में पानी क्यों लगा रहे हैं, जिससे स्मूथली कट हो जाए, ये क्रैक ना कर जाए। ठीक है, हम ज्यादा पानी नहीं लगाएंगे वरना ये जो है क्रैक ऑटोमेटिकली पानी से ही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर हल्के से क्रैक्स लगाएंगे। हम भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सरफेस उससे टच कर रहा है, एक सरफेस दूसरे सरफेस से कहाँ पे टच कर रहा है, वहां पे कट लगाएंगे एंड देन विल प्लेस द रिंग्स ऑन ईच अदर लाइक दिस। ओके, हम ऐसे ही और रिंग्स बड़े करते चले जाएं, फिर बड़े करने के बाद फिर छोटे करते चले जाएं और इसको स्टेबल करने के लिए हम यहाँ पे क्ले से इसको सरफेस को पेस्ट कर देंगे जिससे ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे से अच्छे से जुड़ जाए। इज इट पॉसिबल फॉर यू पीपल टू डू? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? So this, by doing this you can join the coils like this. So you can make object of any size. कोई confusion है? Let's start the next one, which is slab. Okay, for that we need rolling pin. We'll take clay and we'll smudge it a bit and then जब आपको लगे कि वो काफी ज्यादा एक दूसरे से जो है इसके पार्टिकल्स जो है मिल गए हैं, then we'll start making perfect circle of this, perfect sphere actually. अगर ये आपका जो है लगता है कि इसमें नमी कम है तो what we'll do, हल्का सा पानी लेके इसको जो है 2-3 बार में कर सकते हैं, स्मर्ज कर सकते हैं। रोटी तो आपने बनाई होगी कुछ लोगों ने। सो विल डू दैट, दो थिंग एंड देन पहले इनिशियल स्ट्रक्चर हम जो है हाथ से भी दे सकते हैं थोड़ा सा। सनबुक का पीस इसको हल्का सा जो है बढ़ा देंगे। ओके, हम क्या करेंगे, स्केल से जो है सबसे पहले देखेंगे कि ये सब तरफ से 5 इंच का अप्रोक्सीमेट हो गया है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा deenge. कोशिश ये करेंगे कि इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेट 1 सेंटीमीटर रहे. नाउ we'll make the mark here and here.
and then हमें 90 डिग्री कुछ तो पता ही है 90 डिग्री क्या होता है. सो वो जो प्रीवियस लर्निंग हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में की थी वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि 90 डिग्री क्या होता है. ठीक है. हो गया. फिर हम इसको जो है कटर को पानी में डुबाएंगे अच्छे से, इसके अंदर की मिट्टी साफ कर लेंगे. क्यों साफ कर लेंगे? क्योंकि हम इसके अंदर हम ग्रूव में डालेंगे और इसमें क्ले लगा होगा. इसके अंदर का क्ले से वो रफ सरफेस एजेस रफ हो जाएंगे. टू मेक दिस एजेस स्मूथ विल क्लीन अप द ब्लेड. और इसमें हम का पानी लगाएंगे और उसको हम सब तरफ से काटते हैं. And then we will remove the extra clay from all sides. Now if we leave the clay like this, ये खराब हो जाएगा. So इसको इसको फिर से हम इसका स्मर्ज कर देंगे एक दूसरे के साथ और जो रिमेनिंग क्ले है दूसरी उसके साथ उसको रख देंगे. And then to make it, हम क्या कर रहे हैं इसको उठा के कई जगह पे लेके जाना है तो हम एक बेसिक इसका बेस तैयार करेंगे एग्जैक्ट मेजरमेंट का. इसके साथ रखेंगे और इसको हल्के से उठा के इसके ऊपर रख देंगे. ओके. सो नाउ इट विल बी लाइक दिस. ठीक है. ये एग्जैक्टली आपका 5x5 का हो गया. इसका बेस तैयार है. नाउ यू कैन टेक इट एनीवेयर. ओके. नाउ इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिफरेंट हमारे पास क्ले टूल्स हैं. हम देखेंगे कि हमें क्या स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरह का बनाना है. उस तरह का स्ट्रक्चर हम इसके ऊपर डेवलप करेंगे टेक्सचर स्टाइल के ऊपर. यस और नो? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है. हम इसके ऊपर लाइंस भी डाल सकते हैं. And we can play around various kind of, you already have studied various kind of compositions in visual studies and various kind of compositions in design concept. So based on principle of design. So this can be done as well. Along with that, what you can do, you can make various kind of small marbles and then you can put them, but ऐसे नहीं रख देंगे. What we'll do, either we'll make the cuts on both of them जिससे वो अच्छे से चिपक जाए, or either what we'll do, we'll make the groove and then इसमें हल्का सा पॉइंट बना देंगे सर्कल बनाने के बाद and then we'll insert it और थोड़ा स्टेबल हो जाएगा. सेम गोज विद कॉइलिंग. हम इसके ऊपर कट्स लगाएंगे and then we'll paste on that. Clear? कोई confusion है? Okay, so now you have to explore how to make tiles with various kind of interesting textures. Now next task is how to use slab work to create some kind of product. So हमारे पास ये already ready है slab. ठीक है. So हम क्या करेंगे, पहले से प्लान करके रखेंगे कि हमें बनाना क्या है. हम पहले पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे. फॉर एग्जांपल हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना है. तो व्हाट विल डू, हम इसको पहले से प्लान है हमारा, हम इसको सर्कल कट करेंगे इसके अंदर.
हमें ज्योमेट्री जो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कैसा एंगल होगा, किस तरह से जुड़ेगा, ये बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर होना चाहिए। इसलिए हमें पहले से ही जो हम जो बनाने वाले हैं क्लिप पे वो प्लान कर लेंगे एक पेपर पे, ठीक है। एंड देन विल कट दिस स्ट्रक्चर। ओके, नाउ टू साइड्स आर रेडी। टू साइड्स, वन साइड एंड वन साइड इज रेडी। एक बेस हमें चाहिए, सो व्हाट विल डू, विल टेक द क्ले एंड देन ये आसपास का जो डस्ट होता जाएगा ना, इसको क्लीन अप करते जाएंगे, वरना ये बाद में क्रैक क्रिएट करेगा आपके स्लैब्स में। व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ बिट थिक एंड देन विल, जितना थिकनेस, जितना वाइड हमें चाहिए उतना वाइड हम ये इसको कर लेंगे। एंड देन देखेंगे अप्रोक्सीमेट हमें कितनी लेंथ चाहिए, अभी नहीं हुआ। विल वर्क ऑन दैट एंड देन वी रोल, यूज रोलिंग पिन टू ठीक है। एंड देन विल कट इट and then we'll see कि how much we need. Okay, ये भी थोड़ा सा छोटा है, ओके हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधा यहाँ से काट देंगे, and then we'll see कि how much thickness we need, कितना वाइड हमें चाहिए। तो हमें ज़्यादा वाइड, हमने इतना वाइड बनाया था, इस बार इतना वाइड नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा पतला बनाते हैं। We'll cut like this and then we'll put on that edge and to measure. This is perfect, but हम ऐसे नहीं चिपकेगा, हमें कट्स लगाने पड़ेंगे दोनों एजेस पे। This is one joinery technique have been evolved by human being in the from very beginning days. हाँ भाई कैसे जुड़ेगा, उन्होंने कैसे सोचा होगा भाई, ये तो टूट जाता है कुछ, फिर उन्होंने कुछ देखा होगा ऐसी चीज़ जुड़ी हुई, फिर वहाँ से क्रैक्स लिए, पेड़ों के क्रैक्स देखे होंगे, ट्रीज के बाग्स में होते हैं एक दूसरे में के अंदर ग्रूव्स रहते हैं, जैसा नो वहाँ से लिया होगा, एंड वो टेक्निक इन्होंने ऑब्जेक्ट में यूज करें। एंड देन वी विल प्लेस इट लाइक दिस। ओके, एंड देन वी विल मेक कट ऑन द स्टिच। And then we'll do the same thing on the other side. And then to support this, अब ये यहाँ पे स्टेबल नहीं हो रहा, ये गिर जाएगा, तो what we can do, we can take these kind of structures to initially support the structure. ये हो गया, and then we'll join this surface like this. एज को स्मूथ कर लेंगे, ठीक है, ये सुनो। Yes, sir. बहुत ही पेशेंस से काम करना पड़ेगा आपको। किसके साथ काम करना पड़ेगा?
ठीक है। अगर कहीं कहीं पे क्ले कम हो तो आप क्ले को लीजिए, हल्का सा उसमें पानी जो है, फॉर एग्जाम्पल ये पानी लिया, यहाँ पे हल्का सा ये पेस्ट बनाया और पेस्ट को हमने यहाँ पे ग्रुप में फिल इन किया, ठीक है। इसके बाद हमें जो है ये सारा जो है, आई थिंक आई शुड टर्न इट इन दिस डायरेक्शन सो दैट इट कैन कम इन कैमरा। We'll paste the edge like this. And then we'll see कि कहाँ पे कमी रह गई है, एंड वी कैन आजकल की टेक्नो लैंग्वेज में एडिट कर देंगे। ओके, विल सी। एंड अभी क्या कहते हैं, ये बाहर से तो स्टेबल हो गया लेकिन अंदर से नहीं हुआ। तो जैसे हमने क्वाइलिंग में यहाँ पे अंदर हमने क्ले लगाया था पेस्ट बना के, इन द सेम वे विल मेक द पेस्ट and we'll put on the edges inside. जहाँ पे पॉसिबल है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका हाथ सब जगह चला जाए, बट जहाँ तक जा सकता है वहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टेबल हो जाएगा, बट आप सूखने के लिए इसको ऐसे रखेंगे तो नहीं होगा। आपको सूखने के लिए इसको ऐसे ही इस एंगल में रखना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हल्का सा वो इसके अंदर नमी ना आ जाए और इसके अंदर हल्का सा सपोर्टिंग एलिमेंट हम लगा दें। व्हाट वी कैन डू, जब ये हल्का सा और सूख जाएगा, बट बिल्कुल नहीं सूखा हुआ होगा, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, इसके ऊपर हम कुछ मोटिव्स, अभी मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ आगे एक और, इसके ऊपर हम किसी भी तरह का मोटिव प्लान करके डाल सकते हैं। कोई भी हम इसके ऊपर लाइन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से हर चीज को संभाल के काम करना है, ठीक है। गॉट इट। पिंचिंग में व्हाट यू नीड टू डू, यू टेक अ क्ले, द आइडिया इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड जस्ट you keep pinching the material from all sides till the time it is not getting the desired shape. For example, हम इसके एक लिया पहले क्ले, उसको थोड़ा सा स्मर्ज किया, थोड़ा सा उसको, हमें एक रैंडम सा फेस बनाना है, नॉट वेरी स्मार्ट वन बट रैंडम सा फेस। तो हमने इसको हल्का सा फेस का स्ट्रक्चर देने की कोशिश की। कैन यू सी द नोज नाउ? Yes, sir. है ना? कैन यू सी द ईयर्स नाउ? Yes, sir. ओके, नाउ कैन यू सी द आईज नाउ? Yes, sir. ओके, कैन यू सी द चीक्स? अब चीक्स उसके दब गए, so what we can do, we can take some clay from other side and we can put on the cheeks, and cheeks थोड़ा सा जो है इसको वर्कआउट करना, ठीक है। एंड देन इसका जो है हल्का सा random face for now, but you can give more details by working on it slowly, gradually, and then इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है और डिटेल्स दे सकते हैं using various kind of tools, for an example nose holes, ठीक है। Why are you laughing? नाक में होल नहीं होता क्या? ठीक है। So now pinching you need to explore on by your own. I just gave a random help
एंड फर्दर डिटेल जब आप काम करोगे तो डिटेलिंग पे हम इंडिविजुअली काम करेंगे. सो दिस इज हाउ पिंचिंग पे हम एनी काइंड ऑफ कैटल, elephant face or any kind of structure what we can do, what we want to make, we can explore. So let's start. Thank you.